I would like to quote something. True yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed. Yoga is to be lived. Yoga doesn't care about what you have been. Yoga cares about the person you are becoming. Yoga is designed for a vast and profound purpose, and for it to be truly called yoga, its essence must be embodied, as well said by Adil Balkiwala. I would call the boys of class 7 and 8 on stage to present different forms of yoga in their unique style. जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकामड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ढगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रचिः प्रशिक्षणो मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरसुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचनं प्रभृत्य शेषलेख शेखरं प्रसून धूलिधोरणी विधूसराग्रिपीठभूभुजं राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिर